Dear students, today I am going to discuss with you about some important question and also its answers of Kings and Chronicles, the Mughal courts. So first question is that describe the growth of architecture under the Mughals. So students, now I will discuss with you only important points and also you will try to write the elaboration of this one point means I will discuss with you also means I will tell you about one point what you will write. Buildings got constructed by Babur because we have to write about the all the Mughal emperors during his time how the architecture was developed. सो बाबर के टाइम पे, हुमायूं के टाइम पे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इन लोगों के टाइम पे क्या क्या हुआ था हमको यहाँ पे लिखना है. So buildings got constructed by Babur. What you will write here? You know Babur had spent a major part of his period as emperor in wars. वो अपना लाइफ में बहुत टाइम वो पूरा wars में ही बिताए थे. But after that, whatever little time was left with him, the splendid mosque located means he was also established means constructed the mosque located at Kabuli garden and in Panipat and also Sambhal in Ruhelkhand. Okay, so besides this, Babur had also described his autography means it was one of the famous autography that was the Akbarnama about the interest in the work of construction at Sikri, Dhaulpur, Bayan and Gwalior. मतलब फास्ट यहाँ पे लिखना है कि बाबर अपना लाइफ पूरा वार में बिताने के बाद भी उनके पास जो भी कुछ टाइम बचा था उसमें भी वो मतलब वो टाइम को पूरा आर्किटेक्चर बनाने में मतलब वो अपना यूज किए थे जो कि काबुली गार्डन संभल ये सब जो जगह है ना यहाँ पे भी बहुत कुछ आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है. इसके साथ साथ इनका एक फेमस बुक था जो कि ऑटोबायोग्राफी था बाबरनामा उसमें भी हमको पता चलता है कि कौन कौन सा जगह में क्या क्या चीज वो बनाए थे. सो लाइक दैट बिल्डिंग्स गॉट कंस्ट्रक्टेड बाय हुमायूं. हुमायूं का टाइम पे क्या हुआ था. So he did not get the proper and required time for building construction in his life because Humayun kept rolling during his lifetime. मतलब इनका लाइफ में इतना टाइम नहीं था क्योंकि ना कंस्ट्रक्शन के लिए because he also spent his life some another way and he got the mosque constructed at Agra. Agra में एक ठो mosque बनाए थे मस्जिद and फतेहाबाद in Hisar इसमें भी एक ठो mosque बनाए थे. Then buildings got constructed in by Akbar. अकबर के समय में there were lot of development works also done during his period. In if you will see the political background also so much developed. So there was peace, order, and the wealth during his reign period, and he got the Agra fort comprising nearly 500 buildings constructed, out of which दीवानाई आम, दीवानाई खास, जहांगीर महल, अकबरी महल ये सब चीज बनाए थे वो. कैन पिन पॉइंटेड एज चीफ बिल्डिंग्स. ये यदि हम लोग उनका कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन यदि हम लोग देखेंगे आर्किटेक्चर के बारे में तो ये सब इंपॉर्टेंट पिन पॉइंटेड कंस्ट्रक्शन है उन्हीं का टाइम का. एंड उसके साथ साथ द चीफ वंस वेर बुलंद दरवाजा. ओके एंड बुलंद दरवाजा के साथ साथ दीवानाई आम, दीवानाई खास, जामा मस्जिद एंड टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, पंचमहल, जोधाबाईस पैलेस, बीरबल्स पैलेस ये सारा चीज उन्हीं के समय में बना गया था. लिविंग असाइड द टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती ऑल द अदर बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ रेड स्टोन. वो भी बहुत सारा रेड स्टोन में बनाया गया था. बहुत सारा आर्किटेक्चर हमको उन्हीं के समय में ऐसा देखने के लिए मिलेगा. Then during his during the Jahangir's period, जहांगीर was chiefly fond of planting gardens. और ये जहांगीर का बहुत टाइम गार्डनिंग में और ड्राइंग में मतलब ड्राइंग में वो ज्यादा टाइम स्पेंड किए थे. So marble has been chiefly used during his period means multicolored marble stones. Jahangir got also Akbar's tomb named the Sikandara constructed near the Agra. And next number 5 point is Shahjahan. By Shahjahan, you know there are highly means that period is known as the golden period of Mughal dynasty. Means Shahjahan completely his life spent only for the art and architecture. इन्हीं के समय में मतलब आर्किटेक्चर का बहुत फाइन मॉडल ऑफ मशीनरी हमको देखने के लिए मिलेगा.
जो कि दीवानायाम, दीवानाई खास, सावन भादो, मोती मस्जिद एटसेट्रा ये सारा चीज तो बनाए थे। इसके साथ साथ जो कि फेमस मतलब क्या है ना, ताजमहल के साथ साथ बहुत मतलब गोल्ड एंड सिल्वर में भी हमको डेलिनेटेड विथ नेचुरल सीन्स वी कैन सी, यू कैन राइट। देन औरंगजेब के समय में औरंगजेब एंड द फॉल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब इस समय में आर्ट और आर्किटेक्चर का ध्वंस हो गया था, मतलब डिक्लाइन हो के आया था, बिकॉज ही वाज नॉट ए सक्सेसफुल पावरफुल रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। सो ही गॉट ओनली द शाही मस्जिद कंस्ट्रक्टेड एट लाहौर, लाहौर में शाही मस्जिद बनाए थे। नेदर डिड ही टेक एनी इंटरेस्ट इन हिज डायरेक्शन नॉर एनकरेज्ड, बिल्कुल उनका एनकरेज मतलब बिल्कुल नहीं था इसी के भीतर में, ही डीम्ड इट एज एक्स्ट्रावेगेंस। Okay, so you can write so many important points about the growth of architecture under the Mughals. Now discuss the main outcomes of religious policy of Akbar. Sorry, here is question is outcomes, not commerce. Okay, so now we'll discuss about some important points, that is the extended Mughal empire, powerful Mughal empire, enrichment that altitude for nation building, then rich art and culture. So see what you will write about extended Mughal empire. देखो, मुगल एम्पायर अकबर उस समय में राजपूत पॉलिसी, मतलब राजपूतों का मतलब राजपूत रूलर्स ऑफ इंडिया जो थे ना, ही ऑप्टेड फॉर मेनी हिंदू पॉलिसीज और प्लान्स फॉर देयर वेलफेयर। मतलब मुगल एम्पायर के समय में, अकबर का समय में ज्यादातर बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ था पॉलिटिकल फील्ड में, मतलब ये पूरा सेकुलर पावरफुल रूलर थे, मतलब लोगों का वेलफेयर के लिए बहुत कुछ हिंदू पॉलिसीज एंड प्लान भी वो एक्सटेंड किए थे। मतलब हिंदू नाम आया मतलब ये भी रिलीजियस पॉलिसी में जाएगा। ही सप्रेस्ड मेनी एनिमीज विद द हेल्प ऑफ राजपूत, राजपूत कौन है, हिंदू है, इन लोगों का हेल्प से बहुत सारा शत्रु का विनाश भी किए थे। सेवरल लॉयल राजपूत आल्सो राजास एंड चीफ्स गॉट द विक्ट्री फॉर मुगल किंगडम। इट एडवांस्ड ए ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर। इसमें मतलब ये मुगल एम्पायर का एक तो बहुत बड़ा सा डेवलपमेंट था यदि सोचा जाएगा तो। पावरफुल मुगल एम्पायर देखो, ये हम लोग अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, अकबर का समय में रिलीजियस पॉलिसी क्या था। पावरफुल मुगल एम्पायर बिफोर अकबर, all Hindu rulers, chiefs and rajas were the enemies of Mughal rulers. अकबर से पहले जो हिंदू रूलर्स थे ना, जो चीफ्स थे, जो राजास थे, ये सारे मुगल रूलर का एनिमीज थे। एज दे कॉज ग्रेट लॉस टू द किंगडम, उनका बहुत कुछ लॉस हुआ था। लेकिन ड्यू टू द लिबरल नेचर ऑफ अकबर, अकबर का लिबरल नेचर के कारण से मेनी हिंदू रूलर्स, किंग्स, चीफ्स अप्रोच टू द मुगल कोर्ट, बहुत सारा लोग यहाँ पे मुगल कोर्ट की तरफ से खींच करके आए थे, मुगल मतलब राजाओं का प्रशंसा भी किए थे, हेल्प मतलब एक ठो अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हुआ था। मतलब that is also one of the religious policy because Akbar loved the other religions also. Then enrichment the altitude for nation building, और nation building के लिए वो क्या किए थे, देखो a big number of Hindu came forward in favor of him. Yes, many Hindu people, many Hindu rajas, chiefs also came forward in favor of him and started to work for the development of the nation. Akbar succeeded in his mission of nation or kingdom building. तो इसलिए अकबर को भी सुविधा हुआ था, सारा हर प्रकार का रिलीजियस पीपुल को लेकर के, मतलब हर धर्म का लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, सबको हर प्रकार का लोगों का सपोर्ट करते थे अकबर, इसलिए उन्हीं के समय में नेशन का बिल्डिंग भी हुआ था, एनरिचमेंट द अल्टीट्यूड फॉर नेशन बिल्डिंग। देन रिच आर्ट एंड कल्चर, how the art and culture also developed. His policy helped to bring a new concept and progress in the art and culture. ये जो आर्ट और कल्चर जो दूसरा राजा से, किंग एम्परर से, इन्हीं का टाइम पे ये इसलिए मतलब फेमस था क्योंकि ना यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू पॉलिसी का प्रोग्रेस हुआ था। मुगल आर्ट वाज मिक्स्ड इनटू हिंदू आर्ट, मतलब इनका आर्ट के साथ हिंदू आर्ट भी मतलब जोड़ा गया था। हिंदू और मुस्लिम का मिक्स्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमको देखने के लिए मिलेगा जो अकबर के समय में हुआ था। पर्शियन gave birth to new type of literature and language. New types of the literature and language also we can see during the period of Akbar. Thus, Akbar's religious policy played on an important role in his empire. Listen, student, if you will listen one or two times
this video, then you can clearly understand what about the religious policy of Akbar. Okay. So next question, who wrote the Akbarnama? Describe its content in brief. Now we will discuss about the Akbarnama. Okay, so there are so many important points also. We can write it is the 3-mark question. It carries 3 marks only. So Akbarnama, describe its content in brief. So its author. First we will discuss about its author. Who was its author? Now Abul Fazl. That Akbarnama was written by Abul Fazl. 1 point you can write. The content of Akbarnama can be about that summed up as follows. Now we will discuss. That is the फोर्सफुल डिबेटर एंड इंडिपेंडेंट थिंकर. इसमें अकबरनामा में क्या चीज के ऊपर में ज्यादा कंटेंट को ब्रीफली डिस्कशन किया गया है. द ऑथर ऑफ अकबरनामा अबुल फजल ग्रीव अप इन द मुगल कैपिटल ऑफ आगरा एंड ही वाज वाइडली रीड इन अरबिक, पर्शियन, ग्रीक, philosophy and Sufism. Means there are lot of languages, knowledges also he had. Means Abul Fazl. So he was a forceful debater. इसलिए उनको डिबेटर और इंडिपेंडेंट थिंकर के हिसाब में माना जाता था, और जिसके माध्यम से हु कंसिस्टेंटली अपोज्ड द व्यूज ऑफ द कंजर्वेटिव उलेमा. देखो उलेमास कौन थे ना, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सेंट्स. तो इन लोगों को ये फोर्सफुल डिबेटर, अच्छा डिबेटर इंडिपेंडेंट थिंकर के माध्यम से मतलब अबुल फजल ने दबा करके रखते थे, अपोज करते थे हर प्रकार का सिस्टम को. क्योंकि ना अकबर का सिस्टम जो रिलीजियस, जो फ्लेक्सिबल रिलीजियस पॉलिसी था ना, इट वाज सो मच फेमस ड्यूरिंग हिज टाइम. सो अपोज द व्यूज ऑफ द कंजर्वेटिव उलेमास एंड दिस क्वालिटीज इम्प्रेस्ड अकबर. ये क्वालिटी अकबर को बहुत इम्प्रेस करता था. एंड हु फाउंड दैट अबुल फजल आइडियली सुइटेड एज एन एडवाइजर एंड स्पोक्स पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज. इनको लगता था कि ये जो स्पोक्स पर्सन जो है ना हमारा मतलब राजा की तरफ से, ये बहुत एकदम परफेक्ट थे. देन अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स. दैट वाज द आइन-i-Akbari. लास्ट वन इज द आइन-i-Akbari. Akbarnama is divided into 3 books, which in Ain-i-Akbari the first volume and contains the history of mankind from Adam to one celestial cycle of the Akbar's life. यहाँ पे बहुत कुछ अकबर का लाइफ को लेकर के लिखा गया है. देन अकबरनामा में, बट इनका एक पार्ट जो है ना आइन-i-Akbari, इट इज वन ऑफ द फेमस बुक ऑफ अबुल फजल. Okay, so then completed 13 years. Also you can write that 3 books completed 13 years. Yes, beginning from in 1589, and Abul Fazl worked that book on the Akbarnama for 13 years and repeatedly revising the draft. ऐसा नहीं कि एक बार में फाइनल कर दिया गया था, इसको बहुत बार रिवाइज किया गया था, बहुत बार रिपीट मतलब चेकिंग किया गया था. Then after that it was completed. So Akbarnama was one of the famous book of Abul Fazl, and about the Akbar's different policies is written in that book. Okay, so now you can, I think students, you will write clearly and you will clearly understand about the answer. You can write now nicely also, elaborate. Then number 4 question, examine the importance and limitations of Ain-i-Akbari. नाउ देखो अभी अकबरनामा के बारे में क्वेश्चन था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइन-i-Akbari. आइन-i-Akbari का यदि क्वेश्चन आएगा तो व्हाट यू विल राइट. सी इट इज द मिरर ऑफ अकबर्स रेन, कंसिस्ट ऑफ 5 बुक्स. देखो अकबरनामा डिवाइडेड 3 पार्ट्स, बट आइन-i-Akbari ओनली 1 पार्ट ऑफ अकबरनामा, बट आइन-i-Akbari डिवाइडेड इनटू 5 बुक्स. ओके, सो लॉजिकल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. सो नाउ हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है इंपोर्टेंस देन लिमिटेशन. ओके, इंपोर्टेंस में क्या आएगा ना, इट वाज वन ऑफ द क्राइस्टल मिरर ऑफ अकबर्स रेन. यदि आइन-i-Akbari देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा या मतलब उसको डिस्कशन किया जाएगा बुक को, ये बुक में पूरा क्राइस्टल मिरर मतलब पूरा एकदम क्लियर कट इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा अकबर का शासन का समय का. डिपिक्टिंग हिस्टोरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन अंडरस्टूड अंडरटेकन बाय अबुल फजल. बहुत कुछ पावरफुल टॉपिक को लेकर के लिखा गया है. That's why it was one of the crystal mirror of Akbar's reign. And that book is divided into 5 parts, 5 books. Means we can
write from the book names also from the book, means original NCERT book. That was the मंजिल आबादी, सिपोन आबादी, जो मुल्क आबादी, ऐसा 3 बुक है. लास्ट वन इज द हिस्टोरिकल एंड लिटरेचर. ये ऐसा करके 5 बुक है. तो मंजिल आबादी डिस्क्राइब्स द रॉयल हाउस होल्ड, एंड मुल्क आबादी जो है दैट वाज द थर्ड बुक, एंड सिपोन आबादी जो है this was a second book. Like that you can elaborate also. Otherwise you can write the 5 books name. Okay, manjil abadi, sipon abadi, mulk abadi, then historical and literature book. So like that, that Ain-i-Akbari divided into 5 parts. Then logical historical document. इसमें क्या लिखोगे? ये तो वही हो गया ना, मतलब Ain-i-Akbari one of the official sponsored document. Okay, and also it proved much more importance, means reproduction of the official papers. Here is collection of the historical document and also the official record of Akbar's reign period, and that oral testimonies were cross-checked, and means here not only one time is finalized, it also cross-checked many times and verified also many times before including as facts. That's why it is one of the, its theme is powerful. So the Ain was comprehensive. Ain matlab Ain-i-Akbari was a comprehensive and logical historical document which was also known as the Akbarnama. ये पूरा बुक को अकबरनामा बोला जाता है, जब दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी अकबर. सो ये है 3 पॉइंट इंपोर्टेंस के बारे में. लिमिटेशंस में क्या आएगा ना, डाटा कलेक्शन एंड लिमिटेड रेलिवेंस. यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन हैज नॉट बी यूनिफॉर्मली, मतलब यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है. जैसा कि बहुत सारा प्रोविंसेस थे, सूबास थे, सूबा SUBA सूबास वेर गिवन इंपोर्टेंस ओवर अदर्स. इसके बारे में कुछ कम लिखा गया है. बहुत सारा प्रोविंसेस के बारे में इसका लिमिट के ऊपर में है ये. देन द डाटा कलेक्शन इज ऑल्सो लिमिटेड, हेंस इट इज द लिमिटेड रेलिवेंस फॉर द रेस्ट ऑफ मुगल एम्पायर. मतलब ये बहुत कुछ लिमिटेशन के ऊपर में भी इंपोर्टेंस दिया हुआ है. So that's why, but despite its limitations, the Ain-i-Akbari is an outstanding document of its time, and the Ain constitute a benchmark for studying India. हम लोग यदि Ain-i-Akbari या अकबरनामा बुक को पढ़ेंगे या मुगल एम्पायर के बारे में, हमको 99% तो नहीं 101% information we can get from that book. That's why it was a crystal mirror of the Akbar's reign as well as also Mughal dynasty. Okay, so student, I think you will clearly understand about that 4 question answers. So then I think it will more help to you, it will get more benefit for you also. So I think you will watch 2 times, then you can clearly understand about the answers, how to elaborate the answers also. Okay, so thank you so much.